and this is very important. Okay, beta. So the next section is very important, is about the orbital overlapping diagram. Orbital overlapping. Okay? The concept is quite simple, slightly related to the atomic structure. If I ask you, you have a hydrogen, single covalent bond hydrogen. Okay? Which two orbitals are overlapping in this covalent bond? इस covalent bond में कौन से orbital overlap कर रहे हैं? So आपको ये पता लगाना है कि in which orbital the outermost electron of hydrogen is present. So hydrogen is basically proton number 1, so electronic configuration is 1s1. है ना? So इसका मतलब ये है that outermost electron of hydrogen is present in s orbital. और दूसरे का किसमें है? s orbital. So the orbital overlapping in this hydrogen molecule is basically two spherical orbitals getting overlapped. Okay? And this is the region where you have electrons present. So this is basically a orbital overlapping of two hydrogen atoms. Clear? SS orbital overlapping में हमेशा you have to just simply draw two sphere overlapping each other. ये जो region मैंने shade किया है, this is a region where the electrons are shared. यानी O levels में भी same बनाते थे, यहाँ हम precise orbital की form में बना रहे हैं. In a similar way, if I ask you hydrogen making a covalent bond with chlorine, so we know that the outermost electron of hydrogen is present in s orbital, and the outermost electron of chlorine is present in p orbital. So in this bond, you have s orbital overlapping with a p orbital. So आप इसकी diagram draw करेंगे बेटा, you have to draw one p orbital, ठीक है, and one s orbital getting overlap. And this is the region where the orbital overlapping take place. मैंने क्या किया है? I just draw by like जानबूझ के मैंने ये जो ऑर्बिटल का एक नॉब है इसे छोटा ड्रॉ किया है, ठीक है. नॉर्मल बॉन्डिंग के बाद इस तरह की डिफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल आ जाती है. अगर आपको ये बात सेंस नहीं दे रही, सो यू कैन सिंपली ड्रॉ अ नॉर्मल पी ऑर्बिटल, ठीक है, और यहां पे इसको ऑर्बिटल सेम है. Charges की वजह से नहीं, after orbital, after making a covalent bond, the shape of like the p orbital slightly changes. So एक knob, one knob is larger than the other one, or you can draw the simple one. दोनों सही है, लेकिन I recommend to draw it one knob is smaller. आपको MS में दोनों आंसर्स मिलेंगे, ठीक है. In a similar way, if I ask you which two orbitals are overlapped when you have a covalent bond between two chlorine atoms like Cl2, so yes, बहुत आसान जवाब है. This is basically the pp orbital overlapping. सही है. Now draw two p orbital getting overlapped with each other. Two p orbital overlapping with each other. So one knob is smaller or one knob is bigger than the other one. ठीक है? And this getting overlapped. जनाब याद रखिएगा, this is SS orbital overlapping, this is SP orbital overlapping. S orbital आप left right दोनों साइड दिखा सकते हैं, and this is the PP orbital overlapping. And this orbital overlapping is called head to head. This is called
हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके लिए ऑर्बिटल्स प्रिडिक्ट करना और आसान बनाते हैं इन अ वे कि if I'm just going to sketch a periodic table, so this is group 1 and group 2 of the periodic table, सही है? ये group 1 है and this is group 2, and you remember यहाँ पर कहीं आपके पास the whole group is called the transition metals, है ना? यहाँ पे ट्रांजिशन होते हैं आपके पास, ट्रांजिशन मेटल्स, एंड देन आपके पास जो है वो यहां से स्टार्ट हो जाता है ग्रुप 5, 6, 7, 8 एंड देन 9। ठीक है, ओके बेटा, सो दिस इज ग्रुप 3, group 4 and so on, right? All these are basically called the p block element. Group 3 onwards सारे के सारे कहलाते हैं p block element. The outermost electron is present in p, ठीक है? They are called s block element. ग्रुप 1 ग्रुप 2 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होता है? एस ऑर्बिटल में। दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट एंड दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। सो अगर मैं आपसे पूछूं भाई हाइड्रोजन एस ब्लॉक है ना, हाइड्रोजन तो होता ही एस में, एन सी एल बॉन्ड which two orbitals getting overlap? N is in a group 5 of the periodic table, p block. Chlorine is in group 7 of the periodic table, p block. So this is p। सही है, तो periodic table से आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं 1 2 s ब्लॉक, 3 4 5 6 7 सारे p ब्लॉक और ट्रांजिशन सारे d ब्लॉक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखनी, नो नीड टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, you can easily predict which two orbitals getting overlap। सही, in a similar way, if बस अपनी ये वाली बात लास्ट करते हैं फिर बॉन्डिंग इन कार्बन की तरफ जाते हैं। इफ यू हैव PCl3, ठीक है, देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ फॉस्फोरस विद 3 क्लोरीन एंड दिस इज द शेप। मैं ऑन एंड ऑफ शेप को रिवाइज करवाता रहता हूं, ठीक है, ताकि वो याद होती रहे। पिरामिडल शेप होगी जस्ट लाइक अमोनिया, द बॉन्डिंग इज गोइंग टू बी नियरली 107 के आसपास कहीं होगा, 108 109 भी हो सकता है, ठीक है। Now, if I ask you which two orbitals getting overlapped in pH3, कौन सी orbital overlapping होगी बेटा PCl3 में? तो phosphorus in a group 5 of the periodic table, it's a p block element, and chlorine is p block as well. So the orbital overlapping यहाँ पर क्या होगी? The same orbital overlap करेंगे आपके पास, p orbital of phosphorus and a p orbital of chlorine. One knob is smaller than the other one. p orbital overlapping. ठीक है ना? सिर्फ आपने ग्रुप नंबर प्रिडिक्ट करना, periodic टेबल से देखना है, उससे आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिटल मिल जाएगा एंड देन ड्रॉ द शेप। आइदर इट्स SS, SP, PP, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। द बॉन्डिंग ऑर्बिटल ओवरलैप, यहाँ तक क्लियर है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? So these are the simple examples in which you have to predict the orbital overlapping, which two orbitals are getting overlapped. Done? Okay. Next is orbital overlapping in carbon. In fact, we're talking about the bonding in carbon. ठीक है जी, bonding in
carbon. And before I start bonding in carbon, एक छोटी सी बात और यहां पर लिख लेते हैं. आपको याद है सिग्मा बॉन्ड, a single covalent bond formed between two atoms. ठीक है. Sigma bond in carbon is always formed by head-to-head overlapping. Sigma bond is always formed by head-to-head overlapping. Overlapping of, for the time being आपको इस वर्ड को इग्नोर करना पड़ेगा, hybridized p orbital. ठीक है. Hybridized क्या है? We are going to do it later on. Few minutes के बाद हम कर लेंगे. यानी whenever you have a sigma bond, it's always formed by this type of orbital overlapping. ठीक है बेटा. This is SS orbital, sorry, this is head-to-head orbital overlapping. Clear? In a similar way, whenever the carbon is making an alkene, whenever the carbon is making a pi bond is always formed by side-by-side overlapping. Of unhybridized p orbital. ठीक है बेटा. अब अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की शेप आपने क्या पढ़ी है? दैट्स नॉर्मल द शेप ऑफ द p ऑर्बिटल. एक डम्बेल शेप होती है. ठीक है. तो इस तरह से दो डम्बेल शेप वाले p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं. सॉरी, थोड़ी सी मुझे बनाने में इशू. ठीक है. 2p ऑर्बिटल. दिस इज कॉल्ड साइड बाय साइड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग. ठीक है. द टर्म अनहाइब्रिडाइज्ड अभी हमें अनक्लियर है, अभी हमने इसको नहीं पढ़ा. अभी 2 मिनट बाद में ये समझ लें. ठीक है. तो ये 2 पॉइंट याद रखने की बात है अबाउट द सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड. ठीक बेटा. डन. Now, carbon, proton number 6. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p2. और हम पढ़ कर आए हैं कि दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना. जो हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो क्या कहलाती है? ग्राउंड स्टेट. दिस इज अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. If I draw the box diagram of the last two atomic orbitals or the subshell, S और P को draw करूं अगर मैं, so this is 2s and this is 2p. How many electron in 2s? 2 electrons. How many electron in 2p? 2 electrons, 2 unpaired electron. ठीक है. और आपको ये बात पता है कि whenever carbon, oh sorry, the number of unpaired electron in the outermost shell, outermost subshell, is the number of covalent bonds. So according to the ground state, carbon should make 2 covalent bonds and 1 lone pair of electron. जबकि अगर हम कार्बन का सबसे सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं which is CH4, so you can see carbon always making 4 covalent bond. बल्कि हम वो लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी करें. It means that the ground state configuration of carbon do not explain the bonding in carbon. हम explain नहीं कर पा रहे कार्बन. ऐसे ही है ना.
क्योंकि as per this, in a ground state, carbon should make two covalent bond and must have one lone pair of electron. So, and carbon is not making a covalent bond in a ground state. अच्छा, there are two conditions for the excited state. अगर आपको याद हो, कौन सी थी वो दो condition? Condition ये थी कि there must be a lone pair present in the outermost shell and empty orbital. Look at the box diagram of this carbon. Second shell में you have a lone pair of electron, and in the second shell you also have an empty orbital. So carbon shift one electron from here till here, and it goes to excited state configuration. And in excited state configuration, 2s and 2p, yes, carbon have 1, 2, 3, 4 unpaired electron. In case of CH4, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां, one hydrogen should go there and one there, and it should make 4 covalent bonds. This is basically excited state. तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कार्बन इज ऑलवेज मेकिंग अ कोवलेंट बॉन्ड इन एक्साइटेड स्टेट, कभी भी कार्बन बॉन्ड नहीं बनाता, and whenever carbon is making a 4 covalent bond, it's always excited state configuration. True? सही है, क्लियर है? लेकिन एक बात बताइए, if I ask you कि the energy of 2s और 2p सबशेल क्या सेम होती है? और 2s और 2p की एनर्जी सेम होती है, डिफरेंट होती है? 1s की एनर्जी कम, उससे ज्यादा 2s और उससे ज्यादा 2p. हाँ, 2p के px py pz की एनर्जी सेम होती है, बट द लोअर एनर्जी, सबसे लोअर एनर्जी 1s है, उससे ज्यादा एनर्जी 2s, उससे ज्यादा एनर्जी 2p. इट मींस दैट ये जो हमारे पास 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, इनकी एनर्जी कुछ और होगी और इस वाले कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी कुछ और होगी. But if you look at this CH4 molecule, all carbon hydrogen bond are same type of covalent bond. सबकी same energy होती है, ठीक है ना? सबकी same energy. It means that only excited state do not explain the formation of CH4. क्योंकि अगर सिर्फ excited state में करेगा तो 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए and the one bond must be different. So यहाँ कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का. हाइब्रिड होने का मतलब समझते हैं, मिक्स कर देना. हाइब्रिड फ्यूल पे गाड़ियां चलती है ना हमारे पास. हाइब्रिड फ्यूल मीन दे आर मिक्सिंग इट द इलेक्ट्रिसिटी विद और द बैटरी विद द फ्यूल, ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्स कर देना. बेसिकली इन एक्साइटेड स्टेट, कार्बन मिक्सिंग ऑल दीज 4 atomic orbital together to make 4 orbital of similar energy. हाइब्रिड कर दिया, मिक्स करके कार्बन ने इनको सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? अब मुझे बताइए इस मिक्सिंग में हाउ मेनी एस एंड पी ऑर्बिटल्स आर मिक्स टुगेदर? कितने एस ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं? 1 एस ऑर्बिटल एंड 3 पी ऑर्बिटल. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. और इन सब का नाम sp3 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 होगा. अब ये ना s है ना p है, ठीक है? दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. फायदा क्या हुआ? नाउ दे ऑल हैव द सेम energy. When 4 hydrogen share in 4 sp3 orbitals, they all have the similar energy, similar bond length, similar. The hybridized orbital, sp3 hybridized orbital, have a shape of this. This is the shape of sp3 hybridized orbital. One knob greater or larger than the other knob. ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आ गई? हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर लेते हैं साथ साथ एंड देन वी मूव फॉरवर्ड. द मिक्सिंग ऑफ ओनली इन कार्बन, होती सब में है लेकिन हम सिर्फ कार्बन की बात, ठीक है? द मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals in excited state to make
bonding orbitals of same energy. ठीक है जी, this is basically the definition of hybridization. और हमसे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ओनली द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, नॉर्मली आस्किंग द हाइब्रिडाइजेशन, यही कॉन्सेप्ट पूछा रहा है. ठीक है, तो इफ आई आस्क यू विच टू ऑर्बिटल ओवरलैप when there is a carbon hydrogen bond, so आप बोलेंगे s orbital of hydrogen and sp3 orbital of carbon. Now let's talk about the orbital overlapping of alkanes. In alkanes, all carbon atoms are making four sigma bonds and are sp3 hybridized. ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं सारे. याद रखिएगा, एल्केन्स में बार बार रिमाइंडर दे रहा हूं, एल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है. एल्कीन्स में sp3 नहीं होती, ऑब्वियसली वी कैन डू इट लेटर. हाँ, कार्बन हमेशा sp3 नहीं करता, कार्बन एल्केन में sp3 करता है. ठीक है, एल्कीन्स में कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी. ठीक है, क्लियर. सो इफ आई आस्क यू, यू हैव कार्बन making a single covalent bond with this hydrogen, and so ये bonds कौन से होंगे जनाब? You can see it's an alkane. तो आप बोलेंगे all these carbon hydrogen bonds, सारे के सारे, ठीक है, all these carbon hydrogen bonds are sp3 bonds. ठीक है, they all are sp3 bonds. Clear? Now you draw carbon, इसकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ड्रॉ कर रहे हैं. सही है, यहां तक क्लियर? सही. नाउ ड्रॉ द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग. कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, आई ड्रॉ कार्बन इन द मिडिल. अब कार्बन के बाद कितने sp3 ऑर्बिटल है? 4. सो मैं 4 sp3 ऑर्बिटल ड्रॉ करूं. एक दफा देख लीजिए, फिर ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, दीज आर द 4 sp3 मेकिंग 4 s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, दीज आर द रीजन वेयर दीज ऑर्बिटल ओवरलैप. अब जाए तो यहाँ हाइड्रोजन्स लिख सकते हैं. ठीक है, एंड ऑल दीज बॉन्ड्स आर sp3 बॉन्ड. दिस इज अ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम. बहुत अच्छी नहीं बन सकी, बट ऑलमोस्ट इट गिविंग अ सेंस. I'm going satisfied with this one. ठीक है बेटा, ऑल दीज बॉन्ड्स आर sp3. s बॉन्ड है ये वाला, s ऑर्बिटल फ्रॉम हाइड्रोजन एंड sp3 ऑर्बिटल. सो दिस इज द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ऑफ CH4 molecule.
ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग स्किल्स चेक होती हैं इस टॉपिक में। डन है। नाउ नेक्स्ट वन, C, single covalent bond C. Now this is a ethane molecule making three covalent bond with three hydrogen. So ये carbon hydrogen bond तो ssp3 bonds होंगे, agreed? What about this carbon carbon bond? This one middle वाला, this is sp3 from this carbon and sp3 from other carbon. है ना, जब भी कार्बन बॉन्डिंग में अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है, sp3. So if this is a carbon hydrogen bond, sp3 from carbon and s from hydrogen. If it's a carbon carbon bond, sp3 from carbon and sp3 from other carbon. Done है? अब एक काम करते हैं. Now just have a look. This is the carbon and this is the sp3 orbital of carbon, and this is sp3 orbital of the other carbon getting overlapped, है ना? And each carbon making three covalent bonds or three sp3s orbital overlapping with three hydrogen atoms. तो मैंने पहले राइट साइड का बनाया, this is hydrogen getting overlap, this is hydrogen getting overlap. Hybridized orbital have one knob smaller than the other one. ठीक है, this is a sp3 bond, and all carbon atoms are carbon hydrogen yes bonds are sp3 bond. ठीक है, is it making sense, the other above diagram with the below one? So this is basically the orbital overlapping in alkane. The orbital overlapping in alkene is slightly different than alkane, but it's a slightly going to take a bit of time, so we are going to keep it for the next session. I'm just keeping it till here today. Orbital overlapping of alkane tak. The orbital overlapping of alkene and the remaining part of this chapter is going to be covered in the next session.